Ignition is 10, enabled. 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Now, press 1, press 2. So S200 ignited 4, and 5, safely cleared 6, the umbilical pedestal. 7, The 8, vehicle is traveling, 9, it's crossed the plus umbilical 10 tower. seconds. बहुत सफल परीक्षण दोनों जो स्ट्रैप ऑन बूस्टर थे सॉलिड जो प्रज्वलित आपके स्क्रीन पर आप देख पा रहे होंगे लगातार बहुत तेज आवाज हमारे कानों तक पहुंचती हुई अंतरिक्ष में सफर जारी रखता हुआ GSLV MK3 की पहली उड़ान LVM3 X प्रायोगिक उड़ान. You can see this the GSLV MK3 blazing through the atmosphere, the two solid flames of S200 motors going through the atmosphere. अवलोकित पथ बिल्कुल अनुमानित पथ से तरफ बढ़ता हुआ. बहुत तेज गड़गड़ाहट चारों तरफ केवल एक ही ध्वनि 200 रॉकेट. We just heard the S200 performance normal. The time is 67 seconds and the vehicle has almost nearing 14 kilometers, so it has crossed the heavy dynamic pressure region. Now if you look at the flight sequence, the vehicle has to, we'll go for up to 114 seconds and we will have the ignition of L110 stage. लगभग 114 सेकंड तक ये प्रज्वलन जारी रहेगा और उसके बाद जो लिक्विड द्वितीय चरण है वो RTD जो होता है रियल टाइम डिसीजन वो इसका संवेदन करेगा और त्वरण मान लगातार घटने के बाद जो 114 सेकंड पर होना है जहां पे ऊंचाई लगभग 42 से 43 किलोमीटर होगी वहां पे जो द्वितीय चरण है वो प्रज्वलन हो जाएगा और प्रथम चरण द्वितीय चरण दोनों एक साथ प्रज्वलित रहेंगे. L110 ignited. So L110 has been ignited. So there is going to be a little bit of overlap between the two S200 solid boosters and the L110. Nominally, the separation of S200 should happen around 148 seconds. And L110 nominal performance has been just declared by the range operations director. The time is 144 and altitude around 63 kilometers. जी हाँ, L112 जो 110 स्टेज है द्वितीय चरण वो अभी और 320 सेकंड उसको प्रज्वलित होना है. So two solid strap-on boosters have been successfully separated and the vehicle is in autonomous flight with the L110 ignition going all the way up to maybe burning for another 200 seconds. दोनों जो सॉलिड स्टेज के बूस्टर्स थे दोनों अलग हो जाते हैं यहाँ से और उसके बाद भारतीय समुद्र में गिर जाते हैं. बहुत सफलतापूर्वक संपन्न हुआ. 180 सेकंड बीत जाने के बाद इस समय जो वेलोसिटी है करीब 2 किलोमीटर प्रति सेकंड पहुंचने वाली है. रेंज करीब 138 किलोमीटर है और अल्टीट्यूड 90 किलोमीटर हो चुका है. So 193 seconds. Vehicle is attained almost 2 kilometer velocity at around 95 kilometers. The next event, the closed loop guidance has been initiated in the L110 stage of flight, and we have the payload fairing separation going to take place at 232 seconds, maybe another 20 seconds from now. We are able to see on our screen the S200 strap-on boosters which has been jettisoned using the jettisoning rocket, 6 numbers in each of the strap-ons. Is traveling back into the sea. I think some videos have been shown here on the screen. And जी हाँ, ये बहुत महत्वपूर्ण क्षण था जब ये अलग हुआ था. प्रथम चरण और द्वितीय चरण का अनुमानित जो पथ है वो बिल्कुल अवलोकित पथ के साथ चलता हुआ जो आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं. बहुत ही सामान्य परफॉर्मेंस और हीट शील्ड जो है वो अलग हो चुकी है इस समय 237 सेकंड के बाद में. L110 परफॉर्मेंस नॉर्मल और बहुत ही सामान्य जो निष्पादन है यान का बिल्कुल सामान्य है. अनुमानित और अवलोकित बिल्कुल एक दूसरे के ऊपर. So successful separation of the payload fairing at 237 seconds when the altitudes are 115 kilometers. We have another maybe around 300 and Alok, I think maybe around 320 seconds nominally L110 should burn out and then have the separation.
which will be followed up in the next 5 to 10 seconds, the separation of the care module. बहुत हम लोग नजदीक हैं राधा कृष्ण जी, अगर आप देखेंगे समय तो लगभग 280 सेकंड बीत चुके हैं. Correct. We are very close to it. Maybe another 40 seconds to go when the L110 L110 runs out and performance separates. And if you look at the plots of the time versus altitude and the velocity, a very close match with the pre-flight numbers. There is a plot for the lower portion is the altitude Plus plot 5 minutes. and the upper one is the velocity. So you can see the red one, which is a pre-flight number, and the trace, the green trace which is going over this is the way the flight has been performing. So maybe another 10 to 20 seconds we should have the confirmation of the separation of the L110. So as we were mentioning in the beginning, the L110 separation will take place from the C25 cryogenic stage, and after 5 seconds later the care module will be separated from the L110 C25 जी हाँ, cryogenic stage. तीसरे सिस्टम बहुत सफल में L110 L110 अलग हो चुका. So separation of L110 has been confirmed, and we also have the confirmation of the module crew is module also separated. has been successfully separated from the C25 cryogenic stage. जी हाँ, बहुत ही सफल ये दोनों चरणों का निष्पादन रहा है. 320 सेकंड में जब